resting on the soil. Okay, or in other words, each and every construction which are done in the civil engineering will be supported with the help of the soil, right? Now, for the pavement engineering, obviously, transportation engineering is something where you are actually going to do the test on the pavements. The test on the pavement materials like bitumen and aggregate have already been conducted in your class. Okay. Can anyone please name two pavement, aggregate related tests? Name of the two tests which are done to find the properties of the aggregate. Can anyone tell me? Good morning, sir. Good morning. What is your answer? Kullan Mondol. Yes, sir. Name two tests which are conducted to find the property of aggregates. দুটো টেস্টের নাম বলো যে টেস্টগুলো করা হয় এগ্রিগেটের প্রপার্টির জন্য। Impact test, sir. Crashing, sorry, Los Angeles embarrassing. लॉस एंजलिस, उसके बाद क्या बोले? लॉस एंजलिस के बाद क्या बोल रहे? Aberration, sir. Aberration test. Okay. So these are the two tests actually, impact test and the Los Angeles aberration Sir, test. durability And, guiding হবে? কি? Durability বলে একটা ছিল না? Aggregated durability test তুমি করেছো? না স্যার, তাহলে মনে ছিল না। Okay, my next question is name two tests on bitumen which are conducted to find the properties. দুটো টেস্টের নাম বলো যেটা বিটুমেনের প্রপার্টির জন্য করা হয়। Rahul Sinku. Sir, flash and fire point test. Yes, sir. What are the name of the two tests which are conducted to find the properties of bitumen? রাহুল সিংকু, দুটো টেস্টের নাম বলো যেটা বিটুমেনের প্রপার্টির জন্য করা হয়। Sir, penetration test. আরেকটা Viscosity test. ভিসকোসিটি টেস্ট করেছো তুমি? नहीं सर, मैं किया नहीं हूँ, मैं बस पढ़ा था तो। तो जो करे हो, जो किए हो, उसमें दो टेस्ट का नाम बताओ बिटुमेन के बारे में जो टेस्ट हुआ है अभी तक, उसमें से दो नाम बताओ। सर और याद नहीं है। याद नहीं है तो किए हो क्लास? हाँ सर, मैं लास्ट क्लास किया था बट याद नहीं। कौन लिया था? कौन सा टेस्ट हुआ था लास्ट क्लास में? कौन लिया था क्लास? सर मेरे को वही याद नहीं है सर। अच्छा, कौन लेते हैं वो भी याद नहीं है। तुम क्या याद रख सकते हो? अपना नाम ठीक से याद है?
See, this is your the problem for all the students that you people used to connect to the things, and you people are hoping that only the attendance will be enough for you to get the good marks. Okay, that is not going to be the case in this particular semester. For this particular semester, you have to perform well to get the good marks. Other than doing the regular classes, you have to find your answers properly when the questions will be asked to you. Otherwise, your marks are going to be deducted. Okay, you are not going to get 9 points at each and every semester just by giving your attendance. And this is the case with all the other students. Can anyone tell me which test was conducted in the last class? And who was the concerned teacher who took that particular class? See, there is no response from the other side. Sir, flash and firepoint Flash test. and firepoint test, sir. Chanchal Das. Chanchal sir. Yes, sir. Okay, thank you. So, flash and firepoint test was conducted by Chantal sir. Obviously, you people, I believe that, have understood how the test was conducted and why the test was conducted, which is more important. Okay, it is more important that why the test was conducted than how the test was conducted, because when you are a student, you are going to get the questions from the procedure. जब स्टूडेंट हो तुम लोग को प्रोसीडियर के बारे में ज्यादा पूछा जाएगा, लेकिन जब तुम लोग उसको अपने जिंदगी के काम पे लगाओगे, जब आगे जाके तुम लोग काम करोगे कभी ना कभी, तो कोई भी टेस्ट, ये सिर्फ हाईवे मटेरियल्स के लिए नहीं, कोई भी टेस्ट जो तुम लोग स्ट्रक्चर एनालाइज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स लैब में किए हो, सॉइल मैकेनिक्स लैब में किए हो, कंक्रीट टेक्नोलॉजी लैब में किए हो, या फिर एनवायरमेंटल लैब में करोगे, ठीक है, तुम लोगों को वो याद रखना पड़ेगा कि उसको हम लोग क्यों किए हैं, जो टेस्ट हमने किया है वहां पे क्यों उसका टेस्ट को प्रयोग किया गया है, क्योंकि हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टी जानना है जिसके वजह से हम लोगों को पता चलेगा कि ये एक जगह है मेरा जहां पे मुझे इसको यूज करना है, वैल्यू को। अब वैल्यू यूज करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? वैल्यू यूज करने के लिए मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी चाहिए उसके साथ साथ, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग प्रोसीड्योर देखते हैं। ऑब्वियसली तुम लोग जब साइट पे जाओगे तुम लोगों को टेस्ट खुद से नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तुम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू मुझे मिलेगा उसको लेके क्या काम करना होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो आज का हम लोग का टेस्ट है उसके बारे में बातचीत करने के लिए, ठीक है। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक ऐसा टेस्ट जो कि मेरा पेवमेंट जो रेस्ट करेगा। ऑब्वियसली पेवमेंट विल बी रेस्टिंग ऑन द सॉइल and we people will be doing the test on the soil also. Okay, so whenever you are hearing the name of the soil, I hope that you people understand few basic tests which are conducted to find the properties of the soil. Okay, like your plastic limit, shrinkage limit, moisture content, maximum dry density. Okay, then you people have conducted the test on the shearing properties like the shear test, traxial test. Okay, obviously this kind of shearing properties will be, you need to understand, will be there in your syllabus. Okay, so after doing this particular basic test, what you need to do is that you people are going to understand the load bearing capacity of that particular soil. Okay, applying all the theories and all the formulas that are related, and then you people need to conduct the test. You people need to understand the bearing capacity of the soil. Okay, for the pavement design purpose, however, you do not need to determine the exact bearing capacity as per the rules. Okay, but here there is a relative measurement of the soil strength.
Okay, in the pavement design, you people need to know the relative measurement of the soil strength or the soil's bearing ability. Okay, I'm not going to tell you in the terms of bearing capacity, it is the bearing ability, which we are going to understand from the soil test. Okay, for this particular subject, pavement design, sorry, pavement engineering or transportation, whatever you say. That particular test which we do on soil is the CBR test. Okay, CBR. Now I will ask the question to Onik. Onik Maharatno, please tell me what is the full form of CBR? Onik Maharatno, what is the full form of CBR? Sir, can you please repeat this question? What is the full form of CBR? Sir, Californian bearing ratio. Okay, thank you. It is the California bearing ratio. Okay. So here in this particular name, you can see that there are three parts. Okay. One is from the area where it was actually developed, that is the California. Then obviously the bearing. I have already said it is the bearing ability of the soil which we will be determining. And the third one is your ratio. Now the question is ratio of what? Okay, it is the ratio of two value of the loads. Okay, Monojyoti Saha, please turn off your mic. Okay, thank you. Now, whenever you are talking about the ratio, there will be the ratio of two values of load. Okay, one load value will be calculated for the standard specimen at standard conditions. Other value of load will be determined from the test. Okay, so we will try to understand how this particular theory is actually developed. Okay, so I'm going to show you something for this particular test. Okay, I hope that it is visible. Obviously, I can see right now, so it is visible. So it is the California bearing ratio. Okay, the spelling is just a mistake that I have made. Okay, when I'll be sending you the PDF, spelling mistakes will be rectified. So it is the California bearing ratio CBR from the first letter of all the three letters we have picked for the name as the CBR test. Okay. This is a penetration test developed by the California Division of Highway that I've already said. The first word is California, and it was actually developed in the area of California. Okay. Second thing, this is most widely used method for the design of flexible pavement. Okay. So we have already discussed a few things about the pavement design in your class. Me and Arijit sir for both the groups have already discussed about it. So the first thing was your how many types of pavements are there? There is of two types of pavements are there. Okay, Shubhadeep, anyone can tell me the name of the two type of pavements that are generally constructed? Sir, rigid payment and Rigid flexible payment. Okay, very good. So rigid pavement and flexible pavement. So you can see that this particular CBR test is actually used when we are going to do the
designed with the procedure of flexible pavement. For the flexible pavement, when हम लोग जब फ्लेक्सिबल पेवमेंट का डिजाइन करते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन करने के बारे में सोचते हैं, तब हम लोग को पहले उसका डिजाइन करना पड़ेगा। डिजाइन करना पड़ेगा का मतलब क्या है, उस चीज का हम लोगों को कुछ मेजरमेंट लेना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग जब कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मानो कोई एक गया लड़का ट्राउजर खरीदने के लिए, ठीक है, तो उसका जो कमर का साइज है उसे देखना पड़ेगा ट्राउजर खरीदने के लिए। उसके बाद उस हिसाब से हम लोग ट्राउजर्स खरीदते हैं कमर के साइज को देखने के बाद, ठीक है। जब कोई भी हम लोग दुकान में जाते हैं, ज्वेलरी की दुकान में, अगर किसी को मतलब जो रिंग होता है वो खरीदना होता है, तो पहले उंगलियों का नाप लेना पड़ता है, ठीक है। उसी तरह से ये डिजाइन भी प्रोसेस वैसा ही है। कोई भी डिजाइन, फ्लेक्सिबल पेमेंट हो, रिजिड पेमेंट हो, या फिर स्लैब डिजाइन हो, कुछ भी हो, उसका कुछ मेजरमेंट हम लोगों को पहले जानना होगा, तभी हम लोग उसको बना पाएंगे, ठीक है। डिजाइन इज समथिंग which is related to the measurements that are going to be taken. Okay, now for this particular test, obviously there are some rules which will be applicable, but one of the rules is your design of flexible pavement with the help of the CBR method. Okay, so CBR is generally determined, and it is the thickness of the different element which is actually determined. Okay, now we will be moving to the next part. So there is a part where the apparatus will be used. Okay, so apparatus are generally these that you can see in this particular screen. Okay, so first of all, the apparatus that you are going to use, okay, that in the penetration test, okay, you people should understand that what is your penetration plunger. Okay, penny plunger, hope that you're familiar with this particular thing from the of your strength of materials lab. Okay, in the strength of materials lab, you have done the hardness test. Okay, in the concrete technology lab, you have done the setting time test of cement. Okay, so all these cases were actually, all the tests were actually conducted with the help of a plunger. Plunger is something which is putting the load
particular from the instrument, the load will be given by the plunger. Now, this particular test, there will be a plunger, and the plunger will be of 50 mm dia and 5 centimeters. So you can understand that this test is actually a heavier test compared to the test which are conducted for the सेटिंग टाइम टेस्ट. जो सेटिंग टाइम टेस्ट होता है सीमेंट का, वहां पे लोग प्लंजर यूज करते हैं, लेकिन वो प्लंजर बहुत छोटा होता है, ठीक है, जिसका मेजरमेंट होता है 10 mm के आसपास, लेकिन ये 50 mm का है, ठीक है. जो पेनिट्रेशन प्लंजर जो सीबीआर टेस्ट के लिए हम लोग करेंगे उसका साइज है 50 mm का, ठीक है. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज गोइंग टू बी. नेक्स्ट, ऑब्वियसली लोडिंग मशीन, कैपेसिटी 500 kg. Okay, so loading machine, we'll be showing you the picture of that particular loading machine, and it has a capacity of 500 kg. Okay, then the compaction rammers. compaction rammer का क्या काम होता है? जब भी कोई सैंपल हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को एक रैमर की जरूरत होती है, मतलब हथौड़े के टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट जो कि मेरा कंपैक्शन करेगा, जो मेरा मटेरियल है उसके ऊपर, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज द ऑब्वियसली डायल गेज, फिल्टर पेपर, मिक्सिंग टूल्स, मेजरिंग सिलेंडर. ओके, डायल गेज ऑब्वियसली जो लोडिंग मशीन है उसी पे रहेगा. फिल्टर पेपर का काम कुछ अलग है, ठीक है. जैसे कि ये जो टेस्ट है सीबीआर टेस्ट, ये दो किस्म का होता है. नंबर 1 ड्राई सीबीआर टेस्ट, नंबर 2 वेट सीबीआर टेस्ट, ठीक है. ये जो ड्राई सीबीआर टेस्ट है उसके लिए हम लोगों को ज्यादा परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है. ड्राई सीबीआर टेस्ट के लिए जो हम लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट है वही काफी है, ठीक है, और टाइम भी ज्यादा नहीं लगता है. लेकिन जो वेट सीबीआर टेस्ट है, ठीक है, उसके लिए हम लोग को टाइम लगेगा. कितना टाइम लगेगा? हम लोगों को पहले सैंपल बनाना पड़ेगा. ऑब्वियसली द सैंपल प्रिपरेशन विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्रिपेयर द सैंपल. Then that particular sample will be submerged under the water. Okay, it will be fully submerged under the water for 96 hours. That means days. 4 दिन के लिए वो सैंपल हम लोगों को पानी के अंदर रखना पड़ता है. अब क्वेश्चन है क्यों रखना पड़ता है, ठीक है. क्योंकि जो हम लोगों का फील्ड कंडीशन है वहां पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है चारों तरफ का वो बहुत हाई है, ठीक है. ग्राउंड वाटर लेवल जो कि जगह का कंस्ट्रक्शन जहां पे रोड बन रहा है उसका ग्राउंड वाटर टेबल बहुत हाई हो सकता है. अब ग्राउंड वाटर टेबल अगर हाई रहता है तो क्या होगा? पानी ऑब्वियसली रहेगा मिट्टी में, ठीक है. तो उसके लिए हम लोगों को कुछ ऐसा अरेंजमेंट करके देखना होगा ताकि हम लोग को सीबीआर का वैल्यू वो पानी रहने के बावजूद हम लोगों को मिले, ठीक है. जो सॉइल है उसमें पानी है उसके बावजूद हम लोग को अच्छा सीबीआर वैल्यू मिले. इसके लिए ये टेस्ट हम लोग करते हैं, सीबीआर टेस्ट, जो कि हम लोगों को 4 दिनों के लिए पानी के अंदर रखना पड़ता है सैंपल को. एंड ऑब्वियसली योर मेजरिंग सिलेंडर. नाउ व्हेन द सैंपल विल बी प्रिपेयर्ड, should be added. Fraction of water will be depending upon the optimum content of the soil. हम लोगों को ऑलरेडी पता है ऑप्टिमम कंटेंट कैसे हम लोग को निकालना. जो है हम लोग के पास ड्राई डेंसिटी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर क्वांटिटी वो है मेरा. उसके साथ हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा उसी को, उस वैल्यू का जो पानी है उसको हम लोगों को ऐड करना होगा. उसके लिए मेजरिंग सिलेंडर हम लोग रखेंगे, ठीक है. So this is the CBR apparatus. Okay, in this particular CBR apparatus, you can see that in this particular figure, this is the dial gauge,
ओके, ये है मेरा डायल गेज, एक दिख रहा है, दूसरा एक डायल गेज यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो दो डायल गेज है मेरे पास। ठीक है, ये जो है मेरा चीज वो है मेरा सैंपल। ठीक है, मोल्ड के अंदर हम लोगों को सैंपल बनाना रहेगा। ठीक है, ये है। फिर इधर देखो, एक स्टील का एक चीज बना हुआ है इधर पे। ठीक है, ये है मेरा प्लंजर। ओके, so this is my plunger which we will be using. Next one is this particular load arrangement. Okay, from this particular arrangement, the load will be coming. Okay, and load will be coming into this particular plunger. Okay, and the loading rate will be 1.25 millimeters per minute. मतलब कि हर एक मिनट में हम कुछ ऐसा लोड डालेंगे ताकि जो मेरा डिफरेंस है वो रहेगा 1.25 मिलीमीटर। नंबर these values are taking the standardized condition। मतलब अगर स्टैंडर्ड कंडीशन मेरे बहुत ही अच्छी तरह से मैंने जो सैंपल है उसको बनाया है, बहुत ही अच्छी तरह से लोगों ने जो लोगों मिट्टी उसको एकदम करेक्ट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का जो वैल्यू है उसी मॉइस्चर कंटेंट का जो पानी है उसके साथ हम ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों के पास जो रूम टेम्परेचर है वो एकदम परफेक्ट टेस्टिंग कंडीशन, जो स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन है उसके साथ। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टेस्ट इट इज 25 प्लस माइनस 2। ओके, so if we are going to take the standard conditions, the loading rate will be 1.25 millimeter per minute, and the deflection that will occur after 1 minute is 1.5 millimeters। मतलब क्या है, मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन में इसको टेस्ट किया था। अब मेरा लोड ऐसा होना चाहिए ताकि हम लोगों को जो रेट है लोडिंग का, मतलब 1.25 मिलीमीटर 1 मिनट से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो मेरा प्लंजर है उसके सारे हम लोग जो लोड दे रहे हैं इस सैंपल के ऊपर, उस लोड की वजह से जो सैंपल है 1 मिनट के बाद डिटेक्शन होगा 1.25 मिलीमीटर का। ठीक है, now the problem is when we are going to conduct the test in our laboratory, all these standardized conditions cannot be met। Okay, as a result of it we have fear of something। Okay, so that is why the California bearing ratio name has been given। जब हम लोग टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी में, हम लोगों को नहीं है कि रूम टेम्परेचर क्या है। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग पता कर सकते हैं, लेकिन वो 25 के आसपास नहीं है। गर्मी के मौसम ये टेस्ट कर रहे हैं, 35 डिग्री का टेम्परेचर हो गया। ठीक है, नाउ अगर हम लोग यहाँ पे अगर कि हम लोगों के पास जो टेस्ट कंडीशन है, ठीक है, टेस्ट करने का स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन से थोड़ा अलग है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों को कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। इसी के वजह से हम लोगों को जो टेस्ट है उसको स्टैंडर्ड कंडीशन से थोड़ा अलग होता है। इसके लिए हम लोग को स्टैंडर्ड कंडीशन में लोड मिला था एक पेनिट्रेशन वैल्यू के लिए, और जो हम लोग को एक्चुअल लोड मिल रहा है, ये दोनों में हम लोग रेशियो करके देखते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जब स्टैंडर्ड कंडीशन हम लोग डालते हैं किसी सैंपल है, एक पत्थर का सैंपल, ठीक है, तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट इन दैट पर्टिकुलर सैंपल द लोड रिक्वायर्ड विल बी ह्यूज कंपेयर्ड टू द लोड रिक्वायर्ड फॉर द सेम पेनिट्रेशन इन द सॉइल।
समझ में आया जो বুঝতে পারলে যেটা বললাম বিশু সাহা বিশু সাহা কিছু বুঝতে পারলে যে কথাটা বললাম এখন উৎকর্ষ Yes, sir. যেটা Yes, sir. বললাম বুঝতে পেরেছো Yes, sir. ओके उत्कर्ष Yes, sir. ये रेशियो क्यों लेते हैं अभी समझ में आया तुम लोगों को Yes, sir. क्योंकि जो मेरा स्टैंडर्ड कंडीशन है स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग एक एग्रीगेट सैंपल लेते हैं ठीक है और उस एग्रीगेट सैंपल के ऊपर 1 मिनट में 1.25 मिलीमीटर ही पेनेट्रेशन होगा उस हिसाब से हम लोग लोडिंग करते हैं ठीक है अब मेरा जो ओरिजिनल टेस्ट कंडीशन है उससे मेरा लेबोरेटरी टेस्ट कंडीशन अलग होगा ठीक है इन माय लेबोरेटरी टेस्ट कंडीशन the penetration will not be the same okay my loading rate should be same so in this particular case the loading rate will be 1.25 millimeter per minute so this is our test procedure so there is two process for the compaction of the preparation of the specimen one is your of these is static and other one is your dynamic okay so static and dynamic these are two things that we are going to do okay for either type of condition should be the what kind of rammer should be used what should be their weight is given in the table below okay so for the dynamic condition obviously dynamic compaction okay if we are going for the लेसर इंपॉर्टेंट रोड जो कि मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है उस तरीके का अगर रोड मेरे पास है तो उसके लिए हम लोग लाइट कंपैक्शन करेंगे ठीक है लाइट कंपैक्शन के लिए जो स्पेस लोगों को बनाना पड़ता है जैसे कि एक मोल्ड है ठीक है उस मोल्ड के अंदर हम लोग मिट्टी डालेंगे ठीक है अब उस मिट्टी को हम लोगों को रैमर के सहारे उसको हम लोगों को बनाना पड़ेगा Sir, hello. Hello. उत्कर्ष कुछ बोल रहे थे तुम Yes, sir. हाँ बोलो Yes, sir. सर कंपैक्शन करने के बाद सॉइल को 4 दिन के लिए पानी के अंदर सबमर्ज कर देते हैं। नहीं पानी के अंदर सबमर्ज करने के लिए वो एक अलग प्रोसेस है जो कि है मेरा वेट सीबीआर ठीक है जो कि 4 दिनों के लिए हम लोगों को रखना पड़ता है क्यों क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि जहां पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं रोड कंस्ट्रक्शन उस जगह का सॉइल कंडीशन क्या है तो सॉइल कंडीशन क्या है वो हम लोगों को पता नहीं रहता है अगर ऐसा है कि वहां का वाटर टेबल बहुत ही ऊपर है ठीक है अगर वाटर टेबल ऊपर होता है तो उसमें हम लोगों को कभी कभी ऐसा भी देखना पड़ता है कि पानी हमेशा सॉइल के एकदम सरफेस के आसपास रहेगा ठीक है तो वो जो कंडीशन है उसको हम लोगों को सिमुलेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग जो वेट
जो मटेरियल है, सॉरी वेट जो सैंपल है उसको लेना पड़ता है। ठीक है, यस सर। ओके। So we go back to the things which we are actually discussing. Then the dynamic compaction, actually the rammer was being used, and if we are going for lesser important projects, then we will be using the light compaction, and for the more important test, we will be using the heavy compaction. Okay. Now for the light and heavy compaction, the rammer weights are given. The number of layers for the soil which are actually required is given. The free fall of that particular rammers are actually given. So free fall मतलब क्या है, जो रैमर है मतलब हम लोगों को जो जिस हाइट से वो रैमर का वेट गिरेगा सॉइल के ऊपर, वो है मेरा 31 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर का। ठीक है, देन द ब्लोज पर लेयर। ओके, हर एक लेयर को हम लोगों को ठीक तरह से कंपैक्ट करना पड़ता है, तो ब्लोज पर लेयर विल बी 56 फॉर आइदर केसेस। ओके, इन योर अर्लियर स्टेप्स यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इन अदर टेस्ट, जो दूसरा टेस्ट होता है उसमें भी ये नंबर ऑफ ब्लोज कांस्टेंट रहता है। कभी कभी उसको 15 रखते हैं, कभी कभी 25 रखते हैं। नंबर ऑफ ब्लोज मतलब जिसके सहारे हम लोग एक्चुअली जो सैंपल है उसको कॉम्पैक्ट करते हैं मोल्ड के अंदर। ठीक है, so I'll move into the next part. So this is your next step. Okay, obviously we have to fix the collar at the top of the mold and the base plates to its bottom. जो कि मेरा मोल्ड है वहां पे एक नीचे प्लेट रहता है जिसको बेस प्लेट बोला जाता है, और एक कॉलर रहता है उसके ऊपर। ठीक है, कॉलर मतलब हम लोग जैसे शर्ट पहनते, शर्ट का जैसे कॉलर होता है, शर्ट के सबसे ऊपर का पार्ट। ठीक है, उसी तरह का जो सैंपल है उसका भी एक कॉलर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंसर्ट द स्पेसर डिस्क ओवर द बेस विद द सेंट्रल होल ऑफ द डिस्क एट द लोअर साइड। ओके, जो स्पेसर डिस्क है, ठीक है, जो डिस्क एक मैंने बोला था स्पेसर डिस्क है जो कि एक्चुअली स्पेस प्रोवाइड करता है। अब स्पेस क्यों प्रोवाइड करता है वो हम लोग आगे जाके जानेंगे। ठीक है, विद द सेंट्रल होल, उसके बीचों बीच एक होल रहता है, डिस्क के जो बीचों बीच एक होल रहता है वो कि नीचे की तरफ रहता है, टू पुट द डिस्क एंड ऑफ द कोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर ऑन द टॉप ऑफ द स्पेसर डिस्क। ठीक है, उसके ऊपर एक फिल्टर पेपर भी हम लोग रखेंगे। मतलब क्या है, अभी हम लोग को साफ साफ पता चलेगा कि जो स्पेसर डिस्क है वो एक्चुअली नीचे की तरफ रहेगा मोल्ड का। ठीक है, और उसके ऊपर एक फिल्टर पेपर रखेंगे, उसके सहारे क्या होगा, देखो जब हम लोग मोल्ड को पानी के अंदर रखेंगे तो थोड़ा बहुत पानी वो जो स्पेसर डिस्क है उसके होल से अंदर आएगा। ठीक है, और ये जो पानी का अंदर आने का जो तरीका है उसको स्मूथ करने के लिए हम लोगों को ये जो फिल्टर पेपर है उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर फिल्टर पेपर को रखते हैं तो पानी सही तरह से अंदर आएगा। अगर एक्सेसिव पानी हो जाता है तो फिल्टर पेपर उसको खींच लेगा। ठीक है, कभी भी जो सैंपल है उसका जो होल से जो मिट्टी निकलने का प्रोबेबिलिटी है उसको पूरा घटा देगा। ठीक है, मतलब जब पानी के अंदर हम लोग सॉइल को रखेंगे मोल्ड के अंदर, और अगर एक छोटा होल रहता है उसमें, तो उस होल से बहुत सारा मिट्टी बाहर निकल सकता है। उसको रोकने के लिए हम लोगों को फिल्टर पेपर का यूज करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, नाउ वी हैव टू टेक अबाउट 5 kg ऑफ सॉइल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल। 5 kg का सॉइल रखना पड़ता है, और जो कि सॉइल मेरा 20 mm के पासिंग है, लेकिन 4.75 mm सीप से अगर रिटेन करता है वो सॉइल लेंगे। ठीक है, सॉइल लेने का तरीका भी सेम है। हम लोगों को सॉइल जो लेना पड़ेगा उसको पहले 24 घंटे की, सॉरी, हम लोगों को पहले सॉइल को सीव करना पड़ेगा। ठीक है, सीविंग विल बी डन। ओके, obviously that can be done manually or with the help of the mechanical sieve shaker. Now particular sieve shaker machine, you have to use the soil which will be passing the 20 mm sieve but will be retained on 4.75 mm sieve. Okay,
After that, you have to put that particular soil into the हीटर, ओके, और ओवन के अंदर उसको रखना पड़ता है 24 घंटे के लिए, ताकि उसमें जो भी मॉइस्चर है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। नाउ you have to add some predetermined quantity of water, and that quantity of water will be depending on the OMC. Okay, OMC is your optimum moisture content, or in other words, this is the fixed moisture content. Okay, and after adding the water you have to mix soil. जो कि optimum moisture content है soil का, उसको हम लोगों को पहले ही जानना होगा। ऑब्वियसली हम लोगों को moisture content टेस्ट करना पड़ेगा इसके लिए। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का जो क्वांटिटी होगा सॉइल का, मतलब 1 केजी के लिए मानो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है मैंने 19%, तो 5 केजी का 19% जितना होता है, ठीक है, उतना पानी हम लोगों को लेना पड़ेगा, मतलब 950 ml। अगर 19% मेरा ओएमसी का वैल्यू है तो 950 mm ऑफ सॉइल शुड बी एडेड। सो फॉर 5 kg of soil you have to add the water accordingly, and after addition you have to mix that particular soil with water. Now compact the mixed soil in the mold using either the light or heavy compaction. सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए हम लोग हेवी या फिर लाइट कॉम्पैक्शन किसी तरीके का यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नाउ रिमूव द कॉलर, बेस प्लेट एंड फिल्टर पेपर। जो बेस प्लेट है, कॉलर है, फिल्टर पेपर है, उसको रिमूव करना होता है ताकि हम लोगों को वेट मिल सके। ऑब्वियसली ये जो रिमूवल प्रोसेस है, इसके लिए हम लोग जो अगले दिन इसका वीडियो देखेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। द रिमूवल ऑफ द कॉलर एंड द बेस प्लेट विल बी डिफिकल्ट इन दिस केस बिकॉज द soil will be retained inside that particular material. Now you have to note down the weight of the soil and the mold. Now you have to put this assembly in the penetration test machine, okay, and the plunger should be fixed at the top. Now you apply the load at the rate of 1.25 mm per minute, 1.25 मिलीमीटर पर मिनट के हिसाब से उसको प्लंजर के सहारे लोड को देना पड़ेगा जब हम लोग ये जो सैंपल है उसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग मशीन के अंदर रखेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिकॉर्ड द लोड रीडिंग एट पेनिट्रेशन 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.54, 4.5, 5, in this way. Okay, you have just a few numbers over here, that is 0.51, 1.5, 2, 4, 5, 7.5, in this way. This at each penetration value you have to find the load into the so you can see in this particular I mean photo figure, there are two rings. Okay, this one is for deflection, that is attached directly with the sample or the plunger, and this one is for the loading value. Okay, so you have to find the load also. Now you have to draw the load versus penetration curve. So you are taking the load values which are fixed, and you are taking the penetration, you are taking the penetration values which are fixed, and you are taking the load values. Okay, the load values are at the different points. Now how the CBR value is taken? It is the load corresponding to 2.5 or 5 mm penetration divided by standard load for 2.5 or 5 mm penetration. So दो तरीके का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा। एक 2.5 मिलीमीटर का जो पेनिट्रेशन होगा उसके लिए, और ये रेशियो होगा जो टेस्ट लोड जो हम लोग कर रहे हैं टेस्ट उसके सहारे जो हम लोग का रिजल्ट मिलेगा, डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड लोड। ओके, सो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ CBR. ओके, नाउ
This is your standard load values. Okay, for penetration of 2.5, the load in kg is 1350 kg or 1370 kg. In few books you may find it, and for the penetration of 5 millimeter, it is 2055 kg. Okay, now this is your load versus penetration curve. Okay, so obviously there are few names which are written. Obviously there are correction required for the concave. Now in general, the load versus penetration curve will look like this, parabolic. But in few cases, when the tests are conducted, this particular initial part is concave. Okay, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, ज्यादातर केसेस में स्मूथ कॉन्वेक्स कर्व, लेकिन कभी कभी टेस्ट हम लोग करते हैं तो ऐसा जो इनिशियल पार्ट है वो कॉन्केव रहता है. आई विल explain it why this particular thing happens. This happens due to the uneven surface or the higher impact load at the first stage. Okay, I will be just showing you that particular phenomena, what actually happens in this case. Just give me a few seconds. So I hope that you can see this particular screen. Here what happens, this is your load versus penetration curve. Okay, this should be ideally in this way. This should look ideally in this way. Now what happens in most of the cases, this part is initially convex and then it is concave. Okay, so some S-shaped curve are actually found. Okay, some S-shaped curve is actually found. Let me remove this. Actually, it is inversely drawn due to the rotation of the screen. This one should look like this ideally. Okay, but sometimes it happens that this initial part is of this type. Okay, इनिशियल पार्ट ऐसा होता है, फिर मेरा ओरिजिनल जो कर्व है उसका शेप ये ले लेता है. ठीक है, नाउ द इनिशियल पार्ट इज एक्चुअली concave instead of convex. Why this kind of thing happen? Because of the fact that whenever we are going to prepare the sample, okay, in the top, at the top of the sample, let me show you. At the top of this sample, just remove it. सैंपल जो है मेरा, ठीक है, सैंपल का ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसमें हम लोग काम करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा अनइवन रहता है. ठीक है, अनइवन रहने की वजह से क्या होता है, हम लोगों का जो अनइवन रहने की वजह से ये जो प्लंजर पहले उसके ऊपर गिरेगा, ठीक है, ये जो लोड है प्लंजर के ऊपर से आएगा, ठीक है, ये प्लंजर है लाल रंग का, तो वो एक्चुअल अनइवन रहेगा. ठीक है, तो उसकी वजह से जो एक्चुअल कर्व साइज होना चाहिए, कर्व का जो नेचर होना चाहिए वो नहीं रहता है. ठीक है, जो एक्चुअल नेचर है उससे थोड़ा अलग है. और हम लोग पहले ही इसके ऊपर 1.25 मिलीमीटर पर मिनट के हिसाब से एक लोड रखते हैं. ठीक है, तो कोई भी लोड अगर अचानक से शुरू होता है तो उसको थोड़ा समझने के लिए हम लोगों को टाइम लगता है. ठीक है, like your new syllabus, when the syllabus was actually introduced, okay, newly introduced for you, it was newly introduced for people like us also. Okay, so that is why what was actually happening
initially it took a few days for us to understand that particular type. Okay, so that is why this kind of particular problem happens. Okay, now after getting the load versus penetration curve, you have to take the values of the load at 2.5 mm and 5 mm penetration respectively, and from there we are going to take the we are going to get the CBR value. Okay, so this is your 2.5 mm penetration, this is 5 mm penetration, and the load corresponding to them are 100, okay, in kg, and for 5 mm it is just less than 300 kg. So whenever you are going to apply this particular formula, okay, so for the 2.5 mm penetration, your obtained load from here is 100 kg. okay, जो हम लोगों ने टेस्ट से हम लोगों को टेस्ट रिजल्ट जो है उसके बारे हम लोगों को जो मिला है वो है 100 kg का, और हम लोगों का जो ओरिजिनल वैल्यू होता है उसका वैल्यू रहता है, ओरिजिनल टेस्ट है जो स्टैंडर्ड कंडीशन में किया गया था उसका वैल्यू होता है 1370 kg का. ठीक है, so 100 divided by 1370 will give you the CBR value for 2.5 mm of penetration. ये समझ में आया तुम लोगों को? এই জায়গাটা বুঝতে পারলে লাস্টে যেটা বললাম? उत्कर्ष, यस सर। मेरा दो टाइप का मेरा वैल्यू मिलेगा, एक है मेरा टेस्ट से यहाँ से ऑब्टेन जो करते हैं हम लोग, ऑब्टेन वैल्यू फ्रॉम द पर्टिकुलर टेस्ट. So in this particular graph, you can see that for 2.5 mm of penetration, the load value is 100 kg. Okay, and for standard condition, it is already given that the value is 1370 kg. Standard condition से मेरा जो value है वो होता है 1370 kg का. तो 100 divided by 1370 जो हम लोगों का value मिलेगा उसके साथ वो होगा मेरा CBR value, and that will be expressed in percentage. सर इसमें 1370 का कहाँ है सर ग्राफ? नहीं, ग्राफ में नहीं मिलेगा, ग्राफ तो हम लोगों ने जो टेस्ट किया है उसके सामने मिला है. ठीक है, जो 1370 का वैल्यू है वो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू. स्टोन एग्रीगेट के लिए फिक्स है? फिक्स है, फिक्स है. ठीक है सर, तो इसमें दो ग्राफ है सर, तो किसका लेना है सर 2.5 mm का? नहीं, जो दो ग्राफ तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, उसका एक जो ग्राफ है वो हम लोगों को एक्चुअली मिला है. ठीक है, and this one is your correction. Okay, this one should be corrected. Okay, this particular graph should be corrected because there is concavity at the initial stage. Concave रहता है थोड़ा बहुत जगह initial stage में, लेकिन ये जो मेरा ग्राफ है कोई अगर दूसरा वैल्यू हम लोग लेके अगर करते हैं, ठीक है, तो उसके सहारे हम लोगों को कुछ ऐसा वैल्यू नहीं मिलता है जो कि करेक्शन का जरूरी है. ठीक है, करेक्शन की जरूरत नहीं है इसमें. जो ये दोनों ही टेस्ट से मिलता है. ठीक है, दो सैंपल अलग अलग मुझे लिया है मैंने, और दोनों सैंपल के लिए ये दो वैल्यू हम लोगों को मिला था, जिसमें एक के लिए हम लोग को करेक्शन करना हो रहा है, दूसरे के लिए करेक्शन नहीं करना हो रहा है. ठीक है, अभी समझ में आया उत्कर्ष? हेलो, can you hear me, Utkarsh? Anyone else is having any kind of problem regarding understanding this particular thing? कोई दूसरा है जिसके मन में सवाल है कि दो एक्चुअली क्यों है? ऑब्वियसली दो हम लोगों को मिलेगा दो सैंपल के लिए. एक सैंपल में सर एक क्वेश्चन है. हाँ बोलो. सर सेकेंड वाले ग्राफ में सर 2.5 mm पेनेट्रेशन पे 100 kg लोड है. हाँ, यहाँ पे. हाँ सर फिर उसके बाद लिखा हुआ है सर करेक्टेड 2.5 mm पेनेट्रेशन, जब उसका ऑरिजिन शिफ्ट कर दिया स्ट्रेट लाइन से, ओरिजिनल से शिफ्ट कर दिया है. ये इसलिए क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन से नहीं, ये कॉन्केविटी है. ठीक है, यहाँ पे कॉन्केविटी था, ये जो इनिशियल पार्ट है ये तो कॉन्केव है, फिर जाके ये कन्वेक्स हुआ है.
ठीक है, सर ये तो आप कनकेविटी ये पार्ट सब को हम लोग को चीजें- एलिमिनेट करना होगा. We have to eliminate that concavity part because it is ideally convex. This load versus penetration curve is ideally convex. सर तो वहां पर लिखा हुआ है करेक्टेड 2.5 mm पेट्रेशन, सर उसका वैल्यू 200 kg है। यहाँ पे देखो, ये ओरिजिन जो शिफ्ट हुआ है ना, इसके ओरिजिन तो अगर शिफ्ट होता है तो ऑब्वियसली ये 2.5 भी यहाँ से शिफ्ट होके इधर चला जाएगा. यस सर। ये जीरो का वैल्यू जो है, यहाँ पे जीरो था लेकिन जीरो तभी यहाँ पे है. ठीक है, उसके वजह से ये जो 2.5 है वो भी शिफ्ट होके यहाँ पे 2.5 यहाँ पे शुरू होगा. हाँ सर। So that is why we need to use your theoretical part in this particular I mean test also. But after that, for the correction purpose, you need to do the graphical method. Okay. ओके सर। Now, for this particular test, there are some precautions which are actually required. Okay. Those precautions will be described by Ajitesh sir. Ajitesh sir, please tell Good them morning, about the. student. Good morning, Somadip. Morning, sir. Good morning. Precaution is nothing. It is only to use our common sense, or we can say make ourselves more cautious during performing the test. Although there are not so much precaution, but after that all, we have to keep something in our mind. The first one is already Somadip sir has described all the things, but first one is the rate of loading should be 1.25 millimeter per minute. It should not be more than 1.25 millimeter or less than 1.25 millimeter. Okay. Number two, during the test, we will take the deflection and the corresponding load value, and here we will take the deflection at 0.5 millimeter interval up to 12.5 millimeter. That means first one is 0.5 millimeter deflection, and we will take the load. Second one is 1 millimeter, we will take the load. Third one is 1.5 millimeter, we will take the load. Like this, we will go up to 12.5 millimeter. And next one is before pouring the sample inside the mold, we use lubricating oil to avoid stickiness inside the mold. Okay, before you pour the sample inside the mold, we will apply the lubricating oil. Okay, now another one is material we will use is 20 millimeter passing, that has already been described by Somadip sir. 20 millimeter passing, not more than 20 millimeter, or retain 20 millimeter, means not more than 20 millimeter or 20 millimeter. Only we will take the passing 20 millimeter, and up to 4.75 millimeter. Already Somadip sir has told you. And next one is we should give the compaction uniformly by rotating the rammer or rotating the rammer in a different place, not in a single position. When we ramming the sample, we should give the compaction uniformly by rotating the rammer, not in a single position. And we should keep the mold in a firm place during ramming, otherwise it may fall or get damaged. Okay. Next one is here in this test we will use one proving ring and one dial gauge. Proving ring for taking load and dial gauge for deflection. Already you know. Where we should handle it properly. If we mishandle it, both of two may get damaged. Okay. Next one you can
Next one we can say that after the test, if we get the result, one result means 2.5 millimeter and 5 millimeter. If we get the result 2.5 millimeter is greater than 5 millimeter, then it is okay. But if we get the result 5 millimeter greater than 2.5 millimeter, then the test should repeat. This is all the precaution we can take during the test of the CBR test. Okay. Now, Somadip. Yes, thank you, Ajitesda. Okay. Actually, I will like to add something to the point that you have mentioned. Okay, about for the students that what is your 2.5 millimeter and 5 millimeter penetration? Obviously, these two penetration values are taken mainly after the years of research. Okay, so after the years of research, the researchers have found that these are the two values which the people should be using. Okay, for the getting the CBR value from the graph of load and penetration. Now, at 2.5 millimeter penetration, you are going to get some value of load, and at 5 millimeter penetration, you are going to get some load. Okay, so these two loading values will be different, and obviously for these two different loading values, your CBR values will also be different. Okay, now if your CBR value which you have obtained for the 2.5 millimeter penetration is good enough and is more than the value obtained at 5 millimeter penetration, then your result is correct. Okay, मतलब दो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा लोडिंग का, एक 2.5 मिलीमीटर का जो पेनेट्रेशन है उसके लिए, एक 5 मिलीमीटर है उसको पेनेट्रेशन के लिए. ठीक है, उसके सहारे हम लोग दोनों केसेस में सीबीआर वैल्यू निकाल सकते हैं. अगर 2.5 मिलीमीटर का जो पेनेट्रेशन है उसके लिए जो सीबीआर वैल्यू है वो मेरा 5.5 पेनेट्रेशन के लिए जो सीबीआर वैल्यू उससे ज्यादा होता है तो मेरा टेस्ट सही है. अगर नहीं है तो हम लोग उसको रिपीट करेंगे. रिपीट करने के बावजूद अगर वो वापस आ गया, मेरा कभी भी ऐसा होना नहीं चाहिए कि टेस्ट को हम लोगों ने दोबारा किया और हम लोग को सारे मतलब हर केसेस में ऐसा ही मिलता है कि जो 2.5 मिलीमीटर पेनेट्रेशन के लिए जो सीबीआर वैल्यू है वो ज्यादा होता है 5 मिलीमीटर पेनेट्रेशन से. अगर नहीं होता है तो उसको हम लोग को रिपीट करना पड़ता है. अगर फिर भी नहीं होता है तो हम लोग को वो जो 5 मिलीमीटर का पेनेट्रेशन का सीबीआर वैल्यू है उसी को लेके चलना पड़ता है. लेकिन ये बहुत ही रेयर केस है. ठीक है, ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को जो मैंने अभी आखिर में डिस्कस किया? Yes, sir. Okay, students, thank you for your attention. We will be showing you the video through which the test is being conducted in the laboratory in our next class. Till then, thank you.